The UPA government under continuous pressure. Days after the Supreme Court announced its decision on the CVC, the Prime Minister spoke on the issue in Parliament today. However, his explanation was met with a sharp reaction from Leader of Opposition Sushma Swaraj, who said that they expected at least a clear acceptance of responsibility from the Prime Minister. Here's what happened in Parliament. Honourable Madam Speaker, the post of Central Vigilance Commissioner was due to fall vacant on 8 September 2010 on the completion of the term of Shri Prithvi Sinha. Under the CVC Act 2003, the appointment of Central Vigilance Commissioner is required to be made by the President by warrant under her hand and seal, and on the basis of the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister, the Home Minister and the Leader of Opposition in the House of the People. The meeting of the committee took place on 3/9/2010. The Leader of Opposition gave a dissenting note. In pursuance of the recommendations made by the committee, the President appointed Shri P.J. Thomas as the CVC, and he was sworn in on 7 September 2010. After the appointment of Shri Thomas, two public interest litigation petitions were filed in the Supreme Court challenging the appointment of Shri Thomas as the CVC. Honourable Supreme Court declared the recommendation of the committee as non-est in law and quashed the appointment of Shri P.J. Thomas as Chief Vigilance Commissioner. Madam Speaker, the Honourable Supreme Court has pronounced its decision. We accept and respect the verdict of the Honourable Supreme Court. The government will take into consideration the guidelines/direction given by the court while appointing a new CVC. Thank you. अध्यक्ष जी, सीवीसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू में जो कुछ कहा था, हम सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही बात वो संसद में भी कहेंगे, लेकिन मैं हैरान हूँ प्रधानमंत्री जी, आपका आज का बयान तो जम्मू के बयान से बिल्कुल भिन्न है। जो बात आपने कही थी उस पर मैंने बल्कि रिस्पॉन्ड भी किया था, लेकिन मैं आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप वही बात आज संसद में कहेंगे जहां आपने कहा था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहे हैं, स्वयं अपनी जिम्मेदारी ओन कर रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि आपका एक लंबा कार्यकाल रहा है, इस तरह के कार्यकाल में कुछ गलतियां हो जाती हैं, ये भी एक ऐसी ही गलती है, और आपने ये भी कहा था कि हम ऐसी गलतियां भविष्य में नहीं करेंगे। ये दो बातें जब आपकी आई तो मैंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया था कि अगर प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो इसके बाद मामला समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत हैरानी है कि आपने आज उसमें से एक भी बात संसद में नहीं कही। जो बात आपने बाहर कही वो बात आपको संसद में कहनी चाहिए, वो बात आपको संसद में कहनी चाहिए। जो बात आपने सार्वजनिक रूप से कही वो बात आपको संसद में कहनी चाहिए। Honourable Prime Minister. Madam Speaker, I have no hesitation in repeating what I said in Jammu. Obviously, there has been an error of judgment and I accept the full responsibility for it.